फटा पोस्टर निकला। Bollywood is generally recognized for its singing and dancing masala movies. मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। शायरी नाम है नजाकत का, गुलो बुलबुल पे शेर कहिए। But apart from such identities, Bollywood has produced many timeless classics. Right here, right now, we are to present you with a list of 9 classic Bollywood movies that demonstrated and perceived Indian society from different angles. अरे तू क्यों पीछे रह गई है? खुद ही आके कह दे स्वामी जी से कि शादी हो जाने तक यहीं रुक जा। Those are the movies that portrayed contemporary or historical times with whirlpools of opinions and ideologies. अच्छा बम्बई का, चूना बीकानेर का। पान न हुआ राष्ट्रीय एकता हो गई। Our parents, grandparents, uncles and aunts get goosebumps as they hear those titles. अदरक वाली चाय बनाओ। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। देखा था बिटिया जी अभी तक कुछ भी नहीं भूली। So, here we begin. क्या नंबर है बिल्ले का? जरा पढ़ो तो। Number 9, Diwar. Danny Boyle famously described it as the key to Indian cinema. It indeed is the key movie of the later Yash Raj era, consisting of dramatic dialogue, मेरे साथ चलो, highly eventful sequences, ego and value clashes, जब तक एक भाई बोल रहा है एक भाई सुन रहा है। mothers, बड़े घर में माँ तुम्हारा अकेले इंतजार कर रही है। brothers, वो मेरा भाई है। fathers, कराओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। and the world. और वो सुबह उस दिन आएगी जब मजदूरों को उनका अधिकार, उनकी मेहनत का ठीक सिला मिलेगा। From a mostly rural India, metro life was rising, and those who bothered not much about the morals could, in fact, risk their lives to turn their fates. Like Godfather in Scarface, it portrays a big money empire rooted in evil. It is wrapped in religious, family, and police station drama. फाइल आप किसी दूसरे पुलिस अफसर को दे दीजिए, मैं ये केस नहीं ले सकता। And it holds many of the scenes that later became formulas continuously echoing in movies to come in later, decades and decades. एक आदमी को एक मुर्गी मिल गई जो रोज उसे एक सोने का अंडा दिया करती थी। Number 8, Awara. Tells the conflict of Ram disowning his wife after abduction. क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? Oh, angry young man, but an innocent tramp. Wingmans are just and unjust. ये प्याज लेने वाली है। And dramatic scenes inside Indian households. माँ तुम मेरे बालों में तेल क्यों डालती हो? Awara has also played a serious token in turning out happy ending climaxes into a formula. कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा। इंसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। Number 7, Andhi. वैसे आ कौन रहा है? आरती देवी। Ambitions, power, politics, common man and human emotions. सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। आवाज देने को जी किया, लेकिन A lady politician who revisits her husband after a long separation caused by the differences of class culture and ideologies. लेकिन मैं एक सीधा साधारण आदमी हूँ और हमेशा रहना चाहूंगा। क्या बनाना चाहता है वो तुम्हें? तुम्हारा दम घुटता है यहाँ, जाना नहीं चाहिए था ऐसी जगह। क्या करती हो? काम ही ऐसा है। Her being with her husband will bring her nothing but negative publicity. बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। Wrongly interpreted as based upon Indira Gandhi. हड़ताली करते हैं, फौज और पुलिस को शह देते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से हट जाएं और बगावत कर दें। Andhi was banned during emergency. Do you know what sacrifices were given by this girl? भगवान ने तुझे अछूत के घर जन्म दिया। तू इससे हमारा साथ क्यों छूटे? Number 6, Achut Kanya. मैंने तुम्हें छू लिया।
Casteism is perhaps the darkest spot of Indian culture. मोहन के बेटे ने दुखिया के घर रोटी खाई. Even in 21st century non-metropolitan India, marriage by personal choice is a taboo. Brahmins and Thakurs are caste supremacists. हमारे नाम को कलंक लग रहा है. It was too far back when Dara Muni was a teenager and Devika Rani was the heartthrob of moviegoers. हमें सब बुरा समझते हैं. It gained a widespread popularity and commercial success, locking its lead characters as the very first star couple of Bollywood. माल मेरा अनमोल. अरे तू तो हमारी माँ है. Number 5. Mother India. Mother India is the anthem movie of India. And why should it not be? This epic tale of an Indian woman metaphorically manifests post-independence India and was a counterpunch to a 1927 book of the same name attempting to degrade Indian values. In Academy Award race, it gave tough fight to the legendary Federico Fellini, who won by a single vote. Beautifully shot, consisting of butter-smooth dramatic screenplay, it flashes wrath, rebel, recession, and pinnacle of moral standards held by Radha, who goes up to finally shooting her own son dead for his vendetta. Number 4. दो बीघा जमीन. धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के. Be it British Raj or Rajas and Nawabs, villages were always on the mercy of local landlords. जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकती. The movie is widely considered the best in its genre. तो मैं दे चुका हूँ. उसकी रसीद है. रसीद तो नाथ जी ने दी नहीं है. गाँव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या इतनी बड़ी रकम जुटा सकेगा तू? Visual presentation and cultural concerns touch a remarkable height and demonstrate the toughest times of modern Indian history to its soul. Number 3. Pyasa. In terms of international acclaim, Pyasa is perhaps the most celebrated movie of its time. It's a ruthless critic of a newly emerging city life, of economically struggling post-independence India, and is a tale of a poetic soul colliding with a numb, market-driven society. A rebel without a hope, भैया मत कहो हमें. a heartbreaking tragedy, तुम चाहती हो कि मैं 10 सालों के लिए जिंदा रहूं? a desire to escape the phoniness, meaninglessness of a resurrection and harsh criticism of worldly standards, portraying futility of achievements in a society that admires not the substantial but the banal. Pyasa is the high voltage electric shock that eliminates all the hallucination of opium and forcefully keeps your eyes wide open. मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृत से, जब बुतों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है. Number 2. जाने भी दो यारो. 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम लोगों के हाथ में है. ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तनेजा? इस तनेजा के बच्चे सबक सिखाने में हम आपको पूरा साथ देंगे. Two innocent creatures to act upon morality they learnt in schools. हम होंगे कामयाब एक दिन. They rush to follow the path of the just. कहीं वो लाल कमिश्नर की तो नहीं थी. Internally inspired Hungarian satire creates metaphors through unreal scenes that portray reality with far more powerful impacts. Consisting of a band of finest actors India ever produced. Widely considered
to be the best comedy movie ever made in Hindi. जाने भी दो यारो is excellent on each standard. चलो पालन तो कभी हमने अपने बाप किया क्या का नहीं किया। अरे मेरे को कभी तलवार पति को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। गोस्वामी तुलसीदास एक औरत के जाल को काटकर महात्मा बन गए। मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि तुम में और मुझ में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। Number 1, Guide. Unlike most other movies on our list, Guide takes a dramatically different angle. It is less rooted in a neorealistic or class struggle-based approach and more inherited in deeper struggle of existential values of society and individuals. A self-satisfied young and charming Raju Guide यकीन मानिए बंदा अगर गाइड ना होकर गायक होता तो जोगी बनकर गली गली उदयपुर की गलियों के ही गीत गाता। attempt to push the stone up to the hill and take a self-beating Rosie from the brink of self-destruction to the heights of stardom. But as the life unfolds its pages, Raju finds that the eternal partnership had been but an illusion. Futility of seeking the purpose in momentary phases of life unfolds. देख चुके हैं, मुंह छुपाए साल भर भटकने के बाद इस मंदिर की शरण ली तो तुम लोगों ने मुझे साधु समझ लिया। कृपा कीजिए स्वामी, कृपा कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद। The broken dream, the fall from grace, and a total alienation from worldly machine leads Raju to gradually realize and explore the deepest questions of human condition, which leads so much as to nothing remains valuable but the plain and pure question itself. सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल ये है कि दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला है या नहीं।